guys, welcome to another video lecture of Ashwadeep EduTech. Guys, in the last lecture we have discussed about phylum Platyhelminthus. Now in this lecture we will discuss about phylum Aschlehelminthus. So, phylum Aschlehelminthus. Okay, so as you see, this is the diagram of Ascaris. Okay, so this animal belongs to phylum Aschlehelminthus. Okay, friends, if I talk about Ascaris, this is a endoparasite. Especially ये जो एनिमल्स है ह्यूमन के पेट में मिलता है, गट में मिलता है. जनरली छोटे बच्चों को हम लोग जब अगर बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं तो सॉइल के वजह से उनके नाखून में इसके एग्स लग जाते हैं. एंड वही अगर वो बच्चों ने वही नेल्स, गंदे नेल्स अगर उन्होंने अपने मुंह के अंदर लिया तो उनके जो एस्कैरिस के एग होते हैं वो सॉइल से डायरेक्ट नेल, पहले सॉइल में थे अब नेल्स में है, अब मुंह के अंदर अगर उंगली ली तो वही एस्कैरिस के एग अब उनके पेट में होगा. सो जिसके वजह से स्टमक के प्रॉब्लम्स होते हैं. सो पेट में आने की वजह से दे आर कॉल्ड एज एंडोपैरासाइट्स. ओके, ये इनसाइड द बॉडी चला गया, इनसाइड द सेल रहता है. सो दैट इज एंडोपैरासाइट्स. सो फाइलम एस्क्लेहेल्मिंथस के कैरेक्टर्स हम लोग देखेंगे. सो फर्स्ट कैरेक्टर इज these are long thread like and cylindrical in shape. Hence they are called as roundworm. Hence they are called as roundworms. Second, these animals either free living or aquatic and terrestrial. Also they are endoparasites. As we have discussed कि ये स्टमक के अंदर रहता है. ओके, सो दे आर एंडोपैरासाइट्स. फ्रेंड्स, और एक बात, इस एस्कैरिस की एक खासियत है कि इनमें जो मेल और फीमेल बॉडी होती है, फीमेल बॉडी ऑलवेज साइज में बड़े होते हैं. सो एज यू सी ये इनका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा लॉन्ग होता है बट मेल छोटा होता है. इन द नेचर, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, फीमेल को सुप्रीम पावर दी गई है. फीमेल इज सुपीरियर देन द मेल. इन द ह्यूमन केस इट इज रिवर्स. मेल इज सुपीरियर एंड फीमेल इज नॉट सुपीरियर, इंफीरियर हो सकता है. बट इन द एनिमल्स जो है, जानवर है, इवन प्लांट्स में भी फीमेल इज सुपीरियर, मेल इज इंफीरियर. ओके, सो दिस इज हाउ it is there. Now third point, they are triploblastic and pseudocoelomate. Pseudocoelomate means, triploblastic means they have 3 jumps of layers, that is ectoderm, mesoderm and endoderm. And pseudocoelomate, इनके अंदर सीलोम तो होता है बट फॉल्स सीलोम होता है.
Now fourth point is their body is non-segmented and it is covered with thick cuticle. Okay, so their body is non-segmented and it is covered with thick cuticle. Means what? अगर हम इनके बॉडी को कट करें तो जो सेक्शंस निकलेंगे, इफ वी टेक ट्रांसफर सेक्शन ऑफ दिस बॉडी, अगर ऐसे कट करे जाए, ट्रांसफर सेक्शन बीच में से काटे, सो ट्रांसफर सेक्शन अगर हमने लिया तो इनका जो बॉडी है एक तरीके का स्ट्रक्चर्स नहीं देगा कट करने के बाद। जैसे अगर हम लोग गाजर मूली कट करते हैं तो नीचे से वो पतला होता है और ऊपर से जैसे जैसे वो मोटा होता है, तो वो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर्स नहीं होते, छोटा है फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। तो इनके भी बॉडी में इसी तरीके से, तो दे आर नॉन सेगमेंटेड, मतलब एक जैसा सिमिलरली नहीं है। ओके, सो दे आर नॉन सेगमेंटेड। अगर वो सिमिलर होता, एक ही साइज के एक ही डायमीटर के सारे बॉडी सेम होते तो वो सेगमेंटेड होता। जो यहाँ पे साइज सेम नहीं है तो इट इज नॉन सेगमेंटेड। एंड सेकेंड पॉइंट कहा गया है कि थिक क्यूटिकल। थिक क्यूटिकल इनके बॉडी के ऊपर एक कवर होते हैं जिसको हम लोग क्यूटिकल करते हैं। क्यूटिकल मोस्टली इट इज प्रोटेक्शन होता है, इसके अंदर कोई फंगस या बैक्टीरिया एंटर ना कर सके इनके बॉडी में। इसके लिए एक टफ कवरिंग होती है जो वो बैरियर होता है जिसके वजह से कोई भी फंगस, बैक्टीरिया या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्रोटोजोआस हो, तो वो इनके बॉडी में एंट्री न कर पाए। इसके लिए क्यूटिकल बना होता है एंड प्रोटेक्शन मेनली इसका फंक्शंस होता है। नाउ फिफ्थ इज दे आर unisexual. Now they are unisexual. Yes, male ascaris and female ascaris. Sexes are separate. जैसे ह्यूमन बींग्स में मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स सेपरेट होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग। सो सिमिलरली ओवर हियर एस्कैरिस में मेल एस्कैरिस एंड फीमेल एस्कैरिस दोनों एनिमल्स अलग अलग हो गए। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी इसकी हेलमिंथस, प्लैटी हेलमिंथस की, जिसमें हमने देखा था कि दे आर हर्माफ्रोडाइट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही साथ थे। बट ओवर हियर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल एस्कैरिस एंड फीमेल एस्कैरिस अलग है। सो दे विल गो फॉर दे विल रिलीज देयर रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं, स्पर्म या ओवम, स्पर्म ओवम जो होते हैं उनके साथ वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करेंगे। बट हेलमिंथस, प्लैटी हेलमिंथस में ऐसे केस नहीं है। ओके, उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें नहीं रीड पढ़ना है, बट मैं जानने के लिए आपको बता दे रहा हूँ कि मेल एस्कैरिस एंड फीमेल एस्कैरिस दोनों ही अलग अलग होते हैं। नाउ example is Ascaris. This is the typical most example of phylum Aschlehelminthus. Okay, so friends, hope you like this video. If you like this video, please subscribe to our channel and share with your friends, because sharing is caring. Most important thing is sharing. You should say share. Okay, thank you.